Hello, good morning students. Welcome to e-learning. We are in the 15th lecture of our chapter 5, that is poverty, and we already started the last topic of our chapter, that is measures to reduce poverty. So in this lecture we are going to learn about the employment programs. We have already completed 6 points. This is the 7th point, which is the biggest point, and we are going to learn the employment program is means what all the government have done for giving employment to the rural peoples, to the backward peoples, for raising their income, to reduce the poverty. We are going to learn all these different schemes, programs, everything in this particular topic. So let's start with this particular employment program. So what does the employment program means? What do you find? It has been started how? You find that is of one organization, that is we have made, that is we can say integrated rural development program, that is IRDP, or we can say SGSY, that is Suvarna Jayanti Gram Sarojgar Yojana. So all these particular this or the either this way or this way, we can say the name is been given, that is integrated rural development program. So rural development, the main objective is to focus the rural areas where rural people, that is the poor people, farmer, their income standards, their income increases. Those who are laborers, their income increase. For that particular, this particular organization was been developed, program was been developed. So it was started in the sixth 5-year plan. Sixth 5-year plan, it is nearly 1980s. So you find that various agencies started different programs for rural poor peoples. Here all these programs were merged in, means there are several programs which are there, and it all are under IRDP. Okay, that is integrated rural development program. So it was, all these programs were merged in IRDP on 2nd October 1980. The main objective of IRDP is to encourage the poor families for self employment. Yes, मेन ऑब्जेक्टिव इज व्हाट, जो पुअर फैमिलीज है, जो गरीब लोग हैं, उन लोग को उनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिले. ओके, दे गेट देयर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट सो दैट दे कैन इंक्रीज देयर लिविंग स्टैंडर्ड, दे कैन इंक्रीज देयर इनकम, एंड दे कैन कम अबव पॉवर्टी लाइन, वो बीपीएल से एपीएल में आ जाए. So this was the main objective in 6th 5-year plan which was been made, and there are several schemes which are been there. Now this programs focused on special groups which include small and marginal farmers, agricultural laborers and rural artisans. So यहाँ पे तीन जिन को ज़्यादा फोकस किया. देयर आर 3 ग्रुप्स विच आर बिन डिवाइडेड, दैट इज स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, मतलब बहुत कम, जो लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन नहीं करते, जिसका छोटा छोटा फार्म है, तो वो उन लोग को फोकस किया. स्मॉल एंड मार्जिनल मतलब यहाँ पे बोला कि थोड़ा ही पैसा कमाते हैं वैसे वाले फार्मर, दो दे हैव द गुड अमाउंट ऑफ land, but still they earn less amount of them, that is why they are coming under marginal farmers. Then after agriculture laborers, yes, जिसका फार्म नहीं है, जिसको पास कोई ज़्यादा कुछ है नहीं, तो वो लोग फार्मर्स के अंडर हार्वेस्टिंग का काम, दूसरा क्रॉप रोपिंग का काम, डिफरेंट थिंग्स इट इज़ बिन देयर. So that is been there. And lastly the artisans nothing but we can say जो handicraft, पॉट्स, पॉटरी, ये सब चीज़ जो बनाते हैं रूरल एरियाज में, जिसको ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता, ज़्यादा पैसे नहीं मिलते, तो उन लोग के लिए, आर्टिशंस के लिए भी कुछ उन लोग ने ढूंढा था. सो ऑल दिस वर द 3 क्लास ऑफ पीपल विच हैव बीन फोकस अंडर दिस IRDP प्रोग्राम. ना दिस वे IRDP प्रोग्राम बिकेम एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम. इसका नाम क्या है? एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम. सो आइदर क्वेश्चन माइट कम इन एग्जामिनेशन लाइक describe about the anti-poverty program. You have to write about this IRDP, that is it means the employment program under the measures to reduce poverty. Are you getting it? So ये है हमारा IRDP. Let's see what are the different types of schemes which are being included here. So following are the self programs which are given for the self employment. First is IRDP itself, that is इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो एक मेन बन गया है अभी, इसके अंदर सब आते हैं. देन दैट इज second is the trisum is nothing but the training of rural youth and for self employment. मीन्स ये प्रोग्राम के अंदर यहाँ पे जो रूरल एरिया के जो यंगस्टर्स है, यूथ है, उन लोग को ट्रेनिंग दी जाती है, उन लोग को स्किल्स सिखाई जाती है. जैसे यहाँ पे वी हैव सीन इन स्किल इंडिया, जो वुमेंस एंड वी कैन से लेडीज़ है, उन लोग को क्या डिफरेंट सीविंग मशीन्स के ऊपर काम कराया जाता है, उन लोग को सिखाया जाता है, कोर्स कराया जाता है, फ्री में सर्टिफिकेट और जॉब दिया जाता है. वैसे ही इन 1980s टाइम यू फाइंड दैट द यूथ पीपल वर गिवन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग. डिफरेंट स्कोप्स दिखाए थे, डिफरेंट प्रोग्राम्स दिखाए कि कहाँ पे जाके क्या कर सकते हो, इसके लिए कौन सी स्किल्स डेवलप करनी, तो वो सब ट्राइसम्स में किया था. देन यू फाइंड दैट
CRA, दैट इज डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड इन रूरल एरियाज। यस, तो ये प्रोग्राम के अंदर ज़्यादातर फोकस किया है 50% ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रंस विच आर बिन देयर इन रूरल एरियाज, उन लोग 50% से ज़्यादा उन लोग को फोकस करके उन लोग को वेजेस दिए। मतलब ये स्कीम के अंदर ज़्यादा फोकस वुमेन को दिया है एंड दे हैव गिवन एम्प्लॉयमेंट टू द वुमेन सो दैट दे कैन अर्न, एज वेल एज चिल्ड्रंस को भी ध्यान रख के उन लोग को टेक केयर किया है। देन you find that MWS, million well scheme, okay, this is one of the scheme which is also there. Then Sitra, that is SITRA, supplying improved टूल किट्स इन रूरल आर्टिशंस, मतलब आर्टिशंस के लिए अगर इफ दे आर वर्किंग हैंडीक्राफ्ट, पॉट मेकरिंग, डिफरेंट स्कल्पचर्स वो सब बनाते हैं हैंड से, सो फॉर देम सम ऑफ द डिफरेंट टूल्स किट विच विल इम्प्रूव देयर फिनिशिंग, उन लोग का जो चीज़ वो बनाते हैं उसके अंदर फिनिशिंग टच जो चाहिए, सब टूल्स चाहिए वगैरह, जिससे वो अच्छे प्रोडक्ट्स बनाए, अच्छे डिज़ाइन बना सके, ऑल दैट पर्टिकुलर चित्रा वॉज बीन प्रोवाइडिंग टू दिस पर्टिकुलर आर्टिशंस इन द रूरल एरियाज. Then comes the Ganga welfare scheme, which is also one of the part of the same objective कि भाई रूरल एरियाज़ के अंदर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कैसे बढ़ाए. इसका सेम IRDP की तरह ही है, क्या सोशल इकोनॉमिक वेलफेयर जगाए और रूरल पीपल को इनकम इंक्रीज करने का उसका वी कैन से ऑब्जेक्टिव है. ऑन 1st April 1999 IRDP and other programs integrated with it were merged and named as सुवर्ण जयंती ग्राम रोजगार स्वरोजगार योजना. मतलब ये सारे जो चीज़ है IRDP के अंदर, ये जो ट्राइसम है, DWRC है, MWS है, सित्रा है, गंगा वेलफेयर स्कीम है एंड डिफरेंट स्कीम्स विच आर ऑल्सो देयर, ऑल दैट मर्ज टुगेदर इन IRDP एज वेल एज IRDP के साथ में इसका नाम चेंज कर दिया इन 1st April 1999 एज it was been named as we can say Suvarna Jayanti Gram Swarojgar Yojana. Okay, that is also SYGSY. Clear? So this is what you find that the name was been changed. You remember this particular, might come in your MCQ or 1 marks questions. Then under this scheme, in rural areas, apart from development of small trade, self-help groups were also provided infrastructure facility. मतलब ऐसा नहीं कि उन लोगों को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ही देना था, उन लोग को लिविंग स्टैंडर्ड भी अच्छा करना था. सो फॉर मेकिंग अ गुड बेटर लिविंग स्टैंडर्ड दे स्टार्टेड मेकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर्स. सो डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ वर गिवन, रोड्स वर बिल्डअप इन रूरल एरिया वेयर जहाँ पे रोड्स नहीं थे, पीपल लोग को मीन्स द पीपल वर गोइंग वॉकिंग कमिंग एंड इट वॉज बिन a headache thing everything. Then after technology, they does not know about the much about technology, so technology वहाँ पे लाए. loans facilities are given, market for final goods, मतलब जो लोग आर्टिशंस वगैरह गुड्स बनाते हो तो उसका बाहर बिक्री हो सके, अच्छे से प्राइस मिल सके. so all this particular for rural people, this facilities were also given under IRDP, or we can say Savarna Jayanti Gram Swarojgar Yojana. So this was what we find that when the name was being changed or name was being given new, that time this all things were also included in the scheme. But previously it was only focusing on to increase their income standard. मतलब उन लोग का income कैसे raise करो उस पर ही focus था. So that's why this was the scheme. But in 1999, apart from increasing the scheme and self employment, उन लोग ने अलग सी facility भी दी. Yes, so this was the first part in employment program. Now the second part in the employment program is nothing but we can see wage employment scheme. Main thing is भाई उन लोग को employment तो दी है लेकिन पैसे. So wages, so how the wages should be given and what all the schemes are been there. So in wage employment scheme focus on those poor people. इन लोग ने कहाँ पे जो poor people है जिसका income है ही नहीं, सो एनी अदर सोर्स ऑफ इनकम अदर देन फिजिकल लेबर के अलावा भी कैसे दे वो उन लोग ने सोचा है. सो दिस स्कीम डू नॉट ओनली प्रोवाइड सेल्फ, उन लोग सिर्फ काम नहीं देते थे इन द स्लैक सीजन में, मतलब रैपिड सीजन, मतलब अच्छे जहाँ पे एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है वहाँ पे ही उन लोग को जॉब नहीं मिलता था. बट ऑल्सो प्रोवाइड देम ड्यूरिंग द फ्लड्स, ड्रॉट्स, स्कैरसिटी एंड अदर नेचुरल कैलामिटीज़. अलग अलग फ्लड्स मीन्स डिफरेंट डिजास्टर्स आर देयर एंड दैट टाइम अगर लेबर्स चाहिए, दूसरे लोग चाहिए जिसको ये सब साफ कर सके, नहीं तो कुछ भी प्रोवाइड कर सके, तो देयर दैट टाइम ऑल्सो दिस एम्प्लॉयज़ और वी कैन से दिस लेबरर्स वर गिवन दी we can say job opportunities. Under this scheme, infrastructure services developed the rural. Yes,
ये सब स्कीम्स के अंदर ज़्यादातर इन लोग ने क्या डेवलप किया, दैट इज़ द इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, द रोड्स, द बिल्डिंग्स, द ब्रिजेस, द डैम्स एंड एवरीथिंग विच इज़ बीन रिक्वायर्ड इन रूरल एरिया, so that it can become a developed part of a country. And for that they have developed all this particular thing, so that they can again in further future ये सब जो डिजास्टर, नेचुरल डिजास्टर जैसे फ्लड, ड्रॉट, ये सब के अंदर वो लोग यूज टू हो सके। ओके, और उन लोग को प्रॉब्लम ना, इस वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा बिल्ड किया। देन आफ्टर इट दे ट्राइड देयर बेस्ट टू गेट प्रॉपर सैलरीज टू दिस पर्टिकुलर लेबरर्स एज वेल एज वेज एम्प्लॉयमेंट स्कीम इंक्लूड्स। पर इसके अलावा ऑब्जेक्टिव्स इसका क्या क्या है, there are two more schemes which has been there, that is Jawahar Rozgar Yojana, and you find that employment assistance scheme which also focus on giving them 50, उन लोग का मेन ये है कि they try to give 100 days employment, मतलब मिनिमम 100 days in a year they try to give employment minimum। ओके, अगर कोई खाली भी बैठा है तो अगर इन लोग के पास ये रोजगार के अंदर उसका नाम है तो उन लोग को 100 दिन तक तो मिनिमम जॉब मिलेगा। उसके अलावा ज़्यादा वेजेस मिलेंगे। इफ़ दे आर गोइंग आउट दे गेट मोर अमाउंट ऑफ मनी, मतलब ज़्यादा डिस्टेंस के दूर जाके काम करेंगे तो ज़्यादा पैसे मिलेंगे एज एंड व्हेन द डिस्टेंस इंक्रीज। सो ऑल दिस वाज बीन देयर एंड एम्प्लॉयमेंट असिस्टेंस स्कीम वाज द सेम थिंग कि 50% एम्प्लॉयमेंट विच इज़ बीन गिवन टू द वुमन। So all these particular things were been kept in the mind when it is been given for wage employment scheme. Then comes the Prime Minister Rozgar Yojana, the third point under this employment scheme, that is in the decades of 90s एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ऑर्गेनाइज क्यों बाई 90s के अंदर। एक मेन चीज़ समझ लो, 90s के अंदर ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट क्यों चाहिए था, बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म। मतलब हमने पढ़ा है चैप्टर 11 स्टैंडर्ड में इकोनॉमिक रिफॉर्म। सो यू फाइंड दैट बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर foreign industries came in India, organized sectors were there, public sectors, everything was been there. So वहाँ पे क्या हुआ कि इन द डेकेड ऑफ 19 एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इन ऑर्गेनाइज सेक्टर वॉज स्टेगनेंट। ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर ये स्टेबल हो गया एंड इन पब्लिक सेक्टर देर वॉज अ नेगेटिव ग्रोथ विच वॉज फैंड। वाई? बिकॉज प्राइवेट कंपनीज केम अप, देर वॉज अ फॉरेन डायरेक्ट investment which has been there. So all this particular thing made government or public sector negative growth, but private sector was on the rising up. So here you find that there was a more unemployment rate which was been rising under the public sector. On this situation prime minister ने क्या सोचा, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना दे डेवलप एंड दे स्टार्टेड गिविंग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। वहाँ पे उन लोग का ऑब्जेक्टिव क्या था, इन लोग का ये स्कीम, क्योंकि उस टाइम पे ज़्यादा फॉरेन कंपनीज केम अप, दे स्टार्टेड बिल्डिंग अप इन 90s। यू फाइंड दैट पब्लिक सेक्टर पूरा लूज हो चुका था, तो उसके अंदर दे मेड ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टार्टिंग वेंचर्स, मतलब दे मेड जॉइंट वेंचर्स वेस्टेड। देन आफ्टर दे स्टार्टेड टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, जॉइंट वेंचर्स बनाया तो प्रोडक्शन करेंगे, न्यू थिंग्स दे विल फाइंड आउट। सो फॉर दैट एम्प्लॉयज आर रिक्वायर्ड, लेबर्स आर रिक्वायर्ड, सो दे विल प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अगेन टू एजुकेट द अनएम्प्लॉयड। मेन वॉज द थिंग दैट इज टू एजुकेट द अनएजुकेटेड पर्सन, दैट इज इलिटरेट पर्सनस। रूरल एरियाज को एजुकेट करो, अच्छे से समझाओ एंड व्हाट ऑल द थिंग्स विच आर डूइंग, दैट वाज द थिंग मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना। Then you find that the fourth point which comes nothing but we can say National Rural Employment Guarantee Act, that is also known as NREGA. Now it was in 2005, okay, it was been launched in 2005. So in the year 2005 National Employment Guarantee Act was accepted with the objective, उनका objective क्या है, of creating asset through public construction activities। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा assets बनाओ, assets मतलब building, land, buildings बनाओ, infrastructures बनाओ, we can say bridges, dams, all that things which are been required to develop our nation, all these particular things called as nation assets, तो उसको बनाओ। सो फॉर देट इट इज़ बिन दियर। अगर उसको बनाने के लिए ये सब कंस्ट्रक्शन के अंदर ज़्यादा वो लोग करेंगे इन्वेस्टमेंट, व्हाट विल हैपन देयर इन कंस्ट्रक्शन ओनली, यू फाइंड दैट मोर लेबर्स आर बीन रिक्वायर्ड एंड मोर लेबर्स आर वर्किंग अंडर दिस पर्टिकुलर कंस्ट्रक्शन। सो टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू वन पर्सन पर फैमिली ऑफ मिनिमम 100 days. So this program was focusing on per person, or at least one person from one family will get 100 days minimum employment, so that they can go with the living। जिसको कुछ नहीं मिलता था, वो जो ऐसे ही बैठे थे अनएम्प्लॉयड थे, उसको 100 दिन तक पैसे मिलेंगे अंडर दिस पर्टिकुलर मिनिमम, ओके, दिस प्रोग्राम। देन
to rural and it is both in 100 days for rulers and urban areas as well as for the lower middle class families. मतलब ऐसा नहीं कि रूरल पीपल्स के लिए, बट मिडिल क्लास के अंदर भी जो लोअर ग्रुप है उन लोग को अगर काम करना है तो वो भी यहाँ पे अप्लाई करके अपना वी कैन से द एम्प्लॉयमेंट दे कैन गेट. Again, in 2009, this NREGA was reformed as Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, that is MGNREGA. So this was the 4 employment schemes which are been there, and you find that under this IRDP there are several schemes which are been there, and they changed their name in 1999, 1st April 1999, which was Suvarna Gram Jyoti Rojgar Yojana. So this was that particular name. Again, there were several wage employment schemes. You find that this NREGA was being developed. All these particular schemes helped in Prime Minister Rojgar Yojana was also there. So all these particular schemes helped. You find that the rural people are only made to help the rural people so that they can get job at least for minimum 100 days. यहाँ पे 100 days उन लोग ने बोला, लेकिन उससे ज़्यादा वो लोग जॉब देते थे so that they can cover up, they can increase their standard of living, they can give different facilities, infrastructures, technology, loan facilities, market capture कर सकते. All these particular things were being acquired. I hope you have been understood that. Now next lecture will be the last lecture for this chapter, and then after we are going to start our new chapter 6, that is unemployment. Clear? So only 3 points are left which are going to be covered. Still the 3 points are big enough, so it will be a more detailed video which has been there. So you need to write down the notes, complete your notes. As soon as the chapter has been going to complete, you find that we are going to check your notebooks. We will be calling up you, or we will be ask you to send the PDF of this particular chapters. So you be ready with all that particular notes, start completing up, and then after I will be sending you the different extra questions for this chapter also, as well as the previous chapter, that is chapter 4 also. So you need to work on the extra questions also apart from the textbook questions. So start learning, start revising, and complete your notes. Thank you. If you find any doubt, you can just call or message me. Thank you.